Excellencies, leaders of the Global South, Namaskar. It is my pleasure to welcome you in this summit. I thank you for joining us from different parts of the world. We are meeting as a new year dawns and brings new hopes and new energy. On behalf of 1.3 billion Indians, I extend my greetings for a happy and fulfilling 2023 to all of you and your countries. We have turned the page on another difficult year that saw war, conflict, terrorism, and geopolitical tensions. Rising food, fertilizer, and fuel prices, climate change-driven natural disasters, and lasting economic impact of the COVID pandemic. It is clear the world is in a state of crisis. It is difficult to predict how long this state of instability will last. Excellencies, we, the Global South, have the largest stakes in the future. 3/4 of humanity lives in our countries. We should also have equivalent voice. Hence, as the 8-decade-old model of global governance slowly changes, we should try to shape the emerging order. Excellencies, most of the global challenges have not been created by the Global South, but they affect us more. We have seen this in the impact of COVID pandemic, climate change, terrorism, and even the Ukraine conflict. The search for solutions also does not factor in our role or our voice. Excellencies, India has always shared its development experience with our brothers of the Global South. Our development partnerships cover all geographies and diverse sectors. We supplied medicines and vaccines to over 100 countries during the pandemic. India has always stood for a greater role for developing countries in determining our common future. Excellencies, as India begins its G20 presidency this year, it is natural that our aim is to amplify the voice of the Global South. For our G20 presidency, we have picked the theme of One Earth, One Family, One Future.
This is in line with our civilizational ethos. We believe the path to realize oneness is through human-centric development. People of Global South should no longer be excluded from the fruits of development. Together, we must attempt to redesign global political and financial governance. This can remove inequalities, enlarge opportunities, support growth, and spread progress and prosperity. Excellencies, to re-energize the world, we should together call for a global agenda of respond, recognize, respect, and reform. Respond to the priorities of the Global South by framing an inclusive and balanced international agenda. Recognize that the principle of common but differentiated responsibilities applies to all global challenges. Respect sovereignty of all nations, rule of law, and peaceful resolution of to make them more relevant. Excellencies, despite the challenges the developing world faces, I remain optimistic that for time is coming, and our time is coming. The need of the hour is to identify simple, scalable, and sustainable solutions that can transform our societies and economies. With such an approach, we shall overcome the difficult challenges, whether it is poverty, universal health care, or building human capacities. In the last century, we supported each other in our fight against foreign rule. We can do it again in this century to create a new world order that will ensure the welfare of our citizens. As far as India is concerned, your voice is India's voice. Your priorities are India's priorities. Over the next 2 days, this Voice of Global South Summit will have discussed priority areas. I am confident that together the Global South can produce new and creative ideas. These ideas can form the basis of our voice in the G20 and other forums. In India, we have a prayer. Ano bhadraha kratavo yantu vishwataha. It means, may noble thoughts come to us from all directions of the universe. This Voice of Global South Summit is a collective effort for gaining noble ideas for our collective futures.
Excellencies, I look forward to listening to your ideas and thoughts. I once again thank you for your participation. Thank you. धन्यवाद. स्थल पर स्वागत किया जा रहा है बीएपीएस पदाधिकारियों द्वारा। आनंद स्वरूप स्वामी जी द्वारा प्रधानमंत्री महोदयનું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું। સાથે છે બ્રહ્મ વિહારી દાસ સ્વામીજી, ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલ, ગુજરાતના રાજ્યપાલ આચાર્ય દેવવ્રતજી પણ અહીંયા ઉપસ્થિત છે। प्रमुख स्वामी शताब्दी महोत्सव में स्वागतम। वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम। सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम। मातरम मातरम मातरम। वंदे स्वामिनम प्रमुख स्वामिनम। वंदे स्वामिनम प्रमुख स्वामिनम। सर्व प्रेममय सेवा भावमय प्रमुख स्वामिनम। वंदे स्वामिनम प्रमुख स्वामिनम। वंदे स्वामिनम प्रमुख स्वामिनम। सर्व प्रेममय सेवा भावमय प्रमुख स्वामिनम। वंदे स्वामिनम प्रमुख स्वामिनम। वंदे स्वामिनम प्रमुख स्वामिनम। दिव्यं भव्य भव्याति भव्यं सूर्य चंद्र कांति तुल्य रम्यं। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। महोत्सव में आपका स्वागतम। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। महोत्सव में आपका स्वागतम। महोत्सव में आपका स्वागतम। महोत्सव में आपका स्वागतम। जिन्होंने ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज के प्रेरक सान्निध्य, अनुपम स्नेह वात्सल्य एवं अपार कृपाशीष का अनगिनत बार अनुभव किया है, ऐसे हमारे भारतवर्ष के लोक लाडले आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का इस विराट महोत्सव के प्रांगण में हार्दिक स्वागत है। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। इस विराट महोत्सव के प्रांगण में महोत्सव के प्रेरणा मूर्ति परम पूज्य प्रकट ब्रह्म स्वरूप महंत स्वामी जी महाराज, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, गुजरात के महामहिम राज्यपाल श्री आचार्य देवव्रत जी एवं गुजरात की धुरा का वहन करने वाले नवनियुक्त मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल आदि का हार्दिक सत्कार है। बीएपीएस स्वामी नारायण संस्था के वरिष्ठ संत वर्यों ने सभी महानुभावों का सत्कार किया। आइए अब महान संत विभूति ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी जी महाराज के चरणों में विनम्र वंदना करते हुए इस महोत्सव का प्रारंभ वेदोक्त विधि पूर्वक करें, जो हमारी हजारों वर्षों की प्राचीन भारतीय परंपरा रही, जिन्होंने असंख्य लोगों के तप्त एवं त्रस्त जीवन में शांति का वरदान दिया था। ऐसे परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज का बचपन का नाम ही
शांतिलाल था। अतः आइए वेदोक्त शांति पाठ से इस पूजन विधि का प्रारंभ करें। पूजन विधि के प्रत्येक चरण पर BAPS स्वामी नारायण संस्था के बाल युवा मांगलिक प्रस्तुति करेंगे, जो परम आनंद के इस अवसर पर हमें भी अनुपम अनुभूति कराएगा। हमारी वैदिक परंपरा के अनुसार अब करोड़ों भक्तों एवं भाविकों की ओर से परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज एवं आदरणीय श्री प्रधानमंत्री श्री पूर्ण कलश में जल को धारण करते हुए इस महोत्सव के मंगल आरंभ का पवित्र वेदोक्त संकल्प विधि करेंगे। प्रधान संकल्पः नमः परमात्मने श्री स्वामिनारायण परब्रह्म पुरुषोत्तमाय तत्सत्। अद्य भूर्लोके जम्बुद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मावर्तैकदेशे पुण्यभूमौ गुर्जरराज्ये कर्णावती नगरे प्रमुखस्वामी महाराजलरैति महाशुभस्थाने मासोत्तमे मासे मार्गशीर्षमासे कृष्णे पक्षे षष्ठ्यां तिथौ बुधवासरे प्रकटब्रह्मस्वरूप महंत स्वामी महाराजानां तथा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी नाम्नां महानुभावानाम् अत्र उपस्थितानाम् अनुपस्थितानां च सर्वेषां मम तथा च आत्मनः वेदोक्त पुण्यफलप्राप्त्यर्थं सर्वेषां जीवनानां सर्वांगीण तक्षणार्थं तथा च सर्वेषां जीवने दिव्यता प्राप्त्यर्थं भारतवर्षस्य अमृतमहोत्सव पर्वणि सकलराष्ट्रस्य सर्वांगीण उत्कर्षार्थं सर्वत्र सुखशान्ति प्रवर्तनार्थं भगवतः सतां च पूजनपूर्वकं ब्रह्मस्वरूप प्रमुखस्वामी महाराजानां भव्यदिव्यनव्यशताब्दी महोत्सवस्य मङ्गलशुभारम्भम् अहं करिष्ये। महोत्सव के उद्घाटन का ये मांगलिक संकल्प विधि हुआ। यह महोत्सव सनातन भारतीय संस्कृति के एक महान संत विभूति परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज का जन्म शताब्दी महोत्सव है। इसलिए इस भव्य महोत्सव का आरंभ करेंगे भगवान एवं संतों के वैदिक पूजन से। इस महोत्सव स्थल के विशाल भव्य एवं कलामंडित प्रवेश द्वार संत द्वार के गवाक्षों में भारतवर्ष के महान संतों की भव्य प्रतिमाएं विराजमान हैं। आइए इस महान संत परंपरा के चरणों में पूजन अर्चन अर्पण करते हुए
परब्रह्म भगवान श्री स्वामी नारायण एवं परम पूज्य प्रमुख स्वामी जी महाराज की प्रतिमाओं का पूजन करें। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः जनो जानन्निदं सत्यम् मुच्यते भवबन्धनात्। ॐ श्री स्वामिनारायणाय नमः। श्री अक्षर पुरुषोत्तम महाराजाय नमः। श्री प्रमुख स्वामी महाराजाय नमः। पूजनार्थे पुष्पाणि अक्षतांश्च समर्पयामि। ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी जी महाराज का जीवन दीपक समान परोपकारी था, जो दूसरों के अंधकारमय जीवन को प्रकाशित करते थे। उनका जीवन पुष्प समान था, जो स्वयं को कुचलने वालों को भी सुवासित करता था। उनका जीवन कमल के समान निष्कलंक एवं निर्लेप था, जो इस संसार कलिमल में रहते हुए भी शुभ्र पवित्रता की पवित्र प्रेरणा देता रहा था। उनका जीवन सूत्र ही था, दूसरों की भलाई में हमारा भला है, दूसरों के सुख में हमारा सुख है। आइए उनकी इस जीवन भावना के साथ सभी के सुख के लिए उनकी प्रिय वैदिक प्रार्थना का मंगल गान करते हुए हम सब हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। और आइए अब हम परम पूज्य महंत स्वामी जी महाराज एवं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से विनती करें कि इस भव्य दिव्य और नव्य महोत्सव स्थल प्रमुख स्वामी महाराज नगर के मुख्य प्रवेश द्वार संत द्वार का उद्घाटन करके इस महोत्सव का शुभारंभ करें। सरे गुरु जीवन ज्योत जले। शत शत वर्ष सरे गुरु जीवन ज्योत जले। प्रमुख स्वामी की जन्म शताब्दी विश्व सकल जयकार करे। स्वामी की जन्म शताब्दी विश्व सकल जयकार करे। ओ विश्व सकल जयकार करे। विश्व सकल जयकार करे। अक्षर पुरुषोत्तम का जय जयकार। अक्षर पुरुषोत्तम का जय जयकार। प्रमुख स्वामी शताब्दी का जय जयकार। अक्षर पुरुषोत्तम का जय जयकार। प्रमुख स्वामी शताब्दी का जय जयकार। प्रमुख स्वामी का जय जयकार।
के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से पवित्र सूत्र पूर्णपुरुषाय नमः पूर्णपुरुषाय नमः शताब्दियों में कभी कभी ये पृथ्वी धन्य हो जाती है, पृथ्वी धन्य हो जाती है। जिसका जीवन ज्योति बने उस ज्योति का जश्न मनाती है, उस ज्योति का जश्न मनाती है प्रमुख स्वामी वो पूर्ण पुरुष जिनकी ये जन्म शताब्दी है प्रमुख स्वामी वो पूर्ण पुरुष जिनकी ये जन्म शताब्दी है, जिनके जीवन ભારતના ઇતિહાસમાં સુવર્ણ અક્ષરે સ્થાન પામે તેવા સેવા અભિયાનની ફળશ્રુતિ રૂપે તૈયાર થયેલા નગરમાં ભારતના યશસ્વી પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી અને મહાન સ્વામીજી તેઓ પ્રસ્થાન કરી રહ્યા છે બ્રહ્મ સ્વરૂપ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની મૂર્તિ તરફ. They are going to offer tribute to His Holiness Pramukh Swami Maharaj's beautiful murti. We'll have a glimpse, a darshan of it in just a few seconds. આ નગરના સંત દ્વાર પર ભારતની મહાન સંત પરંપરાને અંજલિ રૂપ મુખ્ય દ્વાર પર ભારતના સંતોની પ્રતિમા મૂર્તિઓ છે. સંત તુકારામ, સંત જ્ઞાનેશ્વર, સંત કબીર, તુલસીદાસજી, શંકરાચાર્ય, રામાનુજાચાર્ય, વલ્લભાચાર્ય, સ્વામી વિવેકાનંદજી, ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, નરસિંહ મહેતા, મીરાબાઈ, ભગવાન મહાવીર, ગૌતમ બુદ્ધ, ભારતના સંતોની મૂર્તિઓ સંત દ્વાર પર ઉપસ્થિત અને હવે બ્રહ્મ સ્વરૂપ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની મૂર્તિ તરફ આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ. It's important to note, Dvanit Bhai, that it is in that tradition, the santos that you just mentioned, the Sant Parampara, over the last 2,000 years, it is in that parampara that Pramukh Swami Maharaj has been able to create and revive a sense of Hindu Jagruti, a sense of Bhakti and Seva Jagruti. અમારી સાથે આદર્શ જીવનદાસ સ્વામીજી પણ અત્યારે અહીંયા ઉપસ્થિત છે. સ્વામીજી, આપે હમણાં જ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજના જીવન ઉપર એક જીવન ચરિત્ર, ઇંગ્લિશમાં અમે બાયોગ્રાફી કહીએ, એ લખી છે 13 પાર્ટમાં, 13 ભાગમાં. એમના જીવનમાં એવું શું હતું જેનાથી લોકોને સહેજે આકર્ષણ થઈ જતું? પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની મોટામાં મોટી વિશેષતા એમનું શુદ્ધ અને પવિત્ર જીવન હતું. જેમ સૂર્ય ખીલે, ઉગે અને આપોઆપ ચારે બાજુ ઉજાસ ફેલાય, એમ સ્વામી બાપાના પવિત્ર જીવનનો સૌને એટલો સ્પર્શ થતો અને બધાના જીવનમાં એમના વિશે આકર્ષણ થતું. સ્વામી બાપાનો નિસ્વાર્થ પ્રેમ, એમના જીવનમાં રહેલી સૌનું ભલું કરવાની ભાવના, એ પણ સૌને સ્વામીશ્રી પ્રત્યે આકર્ષતી. Swami Shri was in love and at ease. There was a sense of easy, accessible spirituality that made people feel at home. Dvanit Bhai, we can see now the different gestures that are being shown around the Pramukh Swami Maharaj Nagar. Each set of hands exemplifies a different virtues from Pramukh Swami Maharaj's life. ભક્તિરથ પ્રમુખ હસ્તકમળ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજનો શાશ્વત સંદેશ, જીવનમાં શ્રદ્ધા અને ભક્તિ દ્રઢ કરો. તેઓ તે મુજબ જ વર્તતા. તેઓના કરકમળ હર હંમેશ ભક્તિ સમય અને શ્રદ્ધાસભર રહેતા. તેમની વિવિધ મુદ્રાઓના દર્શન અહીં થાય છે. Reminds me of a beautiful incident, interaction between former President Bill Clinton of the United States and Pramukh Swami Maharaj. One of the first things that His Holiness Pramukh Swami Maharaj said to the former president was,
Hari Krishna Maharaj is here with me, Bhagavan Swaminarayan, and we are because of him. I am only because of him. This sort of submission, this faith in God is the reason that he was able to move forward. ભારતીય સંસ્કૃતિની ઝાંકી, ભારતના વિવિધ પ્રાંતના નૃત્યો પ્રસ્તુત થઈ રહ્યા છે. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ નગરનો એક પરિચય કેળવીએ. પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ નગર બીએપીએસ સ્વામિનારાયણ સંસ્થાના 80,000 સ્વયંસેવકોના 77 લાખ માનવ કલાકોના ભક્તિસભર શ્રમ અને સમર્પણનું સર્જન છે. અહીંયા આપ માણી શકશો કલાત્મક પ્રવેશ દ્વારોની ભવ્યતા તથા અક્ષરધામના સ્થાપત્યની સુહામણી સૃષ્ટિ. તેની સાથે અહીં પ્રેરક અને પ્રભાવક પ્રદર્શન ખંડો છે, માર્મિક અને મૌલિક જ્યોતિ ઉદ્યાન છે તથા આનંદદાયી અને જ્ઞાનવર્ધક બાળનગરી પણ આ નગરના નજરાણા સમાન છે. અને જે તરફ આપણે આગળ વધી રહ્યા છે, આપણા સૌ પર આશીર્વાદ વરસાવતી બ્રહ્મ સ્વરૂપ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજની 45 ફૂટ ઊંચી પ્રતિમા પણ દર્શનીય છે. બ્રહ્મ સ્વરૂપ પ્રમુખ સ્વામી મહારાજ ભજનાનંદી હતા. સમાજ સેવાની અનેક પ્રવૃત્તિઓમાં પરોવાયેલા રહેવા છતાં ભજનનો દોર અતૂટ રાખનારા તેઓના હાથમાં માળા ફરતી રહેતી. તેઓના એ હસ્તકમળ અહીંયા પ્રતીક રૂપે સ્થાપવામાં આવ્યા છે, જે જીવનમાં ભજનનું મહત્વ દર્શાવે છે. And Dvanit, right now on that screen we can catch a glimpse of that beautiful murti that you just spoke of Pramukh Swami Maharaj in that golden ochre color. The Prime Minister, His Holiness Mahan Swami Maharaj, the Honorable Governor of Gujarat and the Chief Minister are all making their way towards that murti to pay tribute. What we see lined along their path are different dancers from regions from across India, Rajasthan, Gujarat, Assam, Odisha, Bengal. It's a beautiful sight.